Hello students, today we are going to start a new chapter in EVS and that is our need for water. So let's get started. Students, when you cry, what flow from your eyes? Yes, tears. When you see a tamarind pod, what happens to your mouth? Yes, your mouth starts watering. When you get hurt or you get a cut, what happens? It starts bleeding. What does this tell us? Tears, saliva, water running from nose and blood are present in our body. They are substances that flow. They contain water. So students, now we are going to start with a small experiment. Now what you have to do is take a small piece of cucumber, grate it and squeeze it hard. Then take a slice of lemon and squeeze it hard too. पहले क्या करना है, आपको एक ककड़ी लेना है, उसको ग्रेट करना है, फिर उसको निचोड़ देना है. सिमिलरली नींबू लेना है, उसको काटना है और उसको भी स्क्वीज़ करना है. What do you see students? We see juice flows out of the grated cucumber and the lemon slice. Then my dear students, what does it tells us? हमें इससे क्या पता चलता है? This tells us that there is water in a cucumber and a lemon. इससे हमें ये पता चलता है कि कुकुम्बर और लेमन में पानी मौजूद है. So students, getting till now? So let's move further now. Students, do you know why do we feel thirsty? हमें प्यास क्यों लगती है? Yes, my dear students, come, I will explain you all. We need water if our body has to function properly. अगर हमारे बॉडी को अच्छी तरह से काम करना है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. Water keeps our blood thin. Water helps to digest our blood. Unwanted substances leave our body through urine. When there is lack of water in our body, we get thirsty. जब हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है तभी हमें प्यास लगने लगती है. Like us, other living things too need water. हमारी तरह ही दूसरे लिविंग थिंग्स को भी पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें होती है. Now students, look at this picture very carefully and tell me, which animals are drinking water at the river bank? Yes, can everyone see properly? Yes, very good. Goats are drinking water at the river bank. Now tell me, who is playing in the river? पानी में कौन खेल रहा है? See it properly, kids. Yes, boys are playing in the river. Similarly now, some people are carrying water home. कुछ लोग हैं पानी घर ले जा रहे हैं. What will they use it for? उनका वो क्या इस्तेमाल करेंगे? Yes, kids, come on, answer fast. Yes, they will use this water to take bath, to wash utensils, to clean their house and many more activities they are going to do with this. So students, do you know what is the public source of water? Come, I will explain you all. In many villages, cows, buffaloes and goats come to the river or pond to drink water. Grass and other bushes can be seen growing near the water hole. तो बच्चों, काव, बफेलो, गोट नदी के किनारे पानी पीने आते हैं
और हमें नदी के किनारे क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग तरह की घास दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली एनिमल्स बेथ देमसेल्व्स इन वाटर, और जानवर क्या करते हैं? नदी में जाकर नहाते भी हैं। नाउ बर्ड्स लाइक लैपविंग, किंगफिशर and egret can be seen around the water source. People from the village wash their clothes in it. गांव से लोग क्या करते हैं? कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी नदी के किनारे आते हैं। They carry water to use at home. Students, do you know? People who keep animals provide drinking water to them without fail. You should also do this if you are having pets. So, give them water at regular intervals. We know that these animals too get thirsty. But there are thousands of other animals. We do not realize that they too need water, like ant, honeybees, crab and scorpions. They also need water like us. Students, can you tell why do we go near a water hole in a jungle to see wild animals? Can anyone knows about this? Okay, I am going to explain you all. अभी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। जब वो प्यासे होते हैं तो वो जंगल में वाटर होल के पास आते हैं। इसीलिए जंगली जानवरों को देखने के लिए लोग भी वाटर होल के पास ही आते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाई डू वी गो नियर ए वाटर होल इन ए जंगल टू सी वाइल्ड एनिमल्स। सो लेट्स मूव फर्दर। स्टूडेंट्स, now we will see the importance of water. Why is water so important to us? People need water not only for drinking, but also for cooking and cleaning. We need water for agriculture and industry as well. Water is very important in our lives. So students, let's try this small experiment. Now what we have to do is take two potted plants of equal growth. Label them as 1 and 2. अभी क्या करना है? हमें दो पौधे लेने हैं इक्वल ग्रोथ के, इक्वल साइज के, और उनको लेबल करना है एज प्लांट 1 and 2. Every morning for the next 5 days, water only plant 1. Do not water plant 2. अगले 5 दिनों के लिए हमें क्या करना है? हर सुबह सिर्फ प्लांट 1 को ही पानी डालना है, प्लांट 2 को पानी नहीं डालना है। After 5 days, what we are going to see? Let's find out. Plant 2, which was not watered, slowly dried up. Plant 1 looks fresh and green. जिस पौधे को पानी नहीं दिया गया था वह धीरे धीरे सूख गया, लेकिन प्लांट 1 ताज़ा और फ्रेश दिखाई दे रहा है। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? This tells us that plants need water to live. Like human beings, plants also need water to live. Got it, students? So let's move further now. Now plants need water. We will see now. We water our potted plants regularly. Similarly, farmers water the crops in their field. Could these plants live without water? क्या plants पानी के बिना जी सकते हैं? Students, if we do not water the plants, then what will happen? अगर हम पौधों को
पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? दे विल डाई, वो मर जाएंगे। Thus we see that plants like animals need water. तो हमने क्या देखा? प्लांट्स भी दूसरे लिविंग बींग्स की तरह उन्हें भी पानी की ज़रूरत उतनी ही होती है। Kids, do you know which plant is this? This plant is called bulrush. Plants like bulrushes ग्रो ओनली इन वाटर। ये जो बुलरश होता है सिर्फ ये पानी में ही उगता है। वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू ग्रो दैम इन सॉइल बट दे कैन नॉट सर्वाइव देयर। नाउ द लोटस, वाटर चेस्टनट एंड hyacinth are also plants that grow in water. So students, hope you all have understood this chapter very well. Thank you.